So very good morning, friends. We'll start today with the introduction, that is unit number 1, Introduction to Databases. Myself, Mahesh Sangvi, working as professor and head in Department of Computer Engineering. Today we will deal with the first unit of database management system, and I hope you might have attended my previous session. So the video of previous session is available on my YouTube channel, and this particular video will also be available on my YouTube channel. I'll be happy if you subscribe my channel and like the video. So let's move towards the discussion that we have to make today. This is what the course this is what the course outcome. At the end of this unit, you should able to design ER model for given requirements, and you should able to convert this ER diagram into database table. So this is what the outcome of unit number 1. So let's start with the topic. Today we will deal with the introduction, then the purpose of database management system, applications of database management system, structure of database management system, various data models of database management system. And this is what our target that we need to finish today, this some of the topic out of this. I hope you will enjoy this session and you will gain good knowledge, good insights from this session today. So let's look at the introduction to database management system. When we are talking about introduction to DBMS, I hope the long form is quite clear to you. It is mentioned here, database management system. So with this, today we will see there are basically two main parts into DBMS, DB and MS. DB stands for database and MS stands for management system. So today we will divide this word DB and MS so that you all will understand the meaning of both, what exactly is DB, that is database, and what exactly is what management system. So let's look at the definition of what database management system. So database is collection of interrelated record. So the definition of database, you can simply define database as collection of interrelated record. When we say interrelated records, it means here this is an example of what database, or you can call it as what table, and in this table you can observe some of the important part, and here you will understand this important part, and that important part is nothing but what you can see. There are fields given here: roll number, student name, and marks. And here roll number 1, 2, and then what 4 means what in this column you will get the record of roll number 1. Sorry, in this row you will get the record of what roll number 1. In this row you will get the roll number of record of roll number 2, and here you will get the record of roll number 4. This way we can say that first record is interrelated with what second record, and that is the reason the definition of database becomes it is collection of interrelated records. So data is normally organized in the form of what tables and views. So soon you will understand the meaning of views. But here we need to understand various operations. First of all, we need to understand how to create this kind of structure of what database, and then how to add, insert, or delete data into what this particular table. So soon we will see the hands-on session where you all will understand how to create database and how we can able to, how we can able to add all these particular operations into what database. Let's look at the next part, that is what MS, management system. So till date we have covered DB, that is database. It is collection of interrelated record, and we have seen it is managed in the form of what tables in case of relational databases. Now we'll see the management system. Management system is all about what software, and it is managing your DB, that is what database. And there are various examples of database management systems, like in your syllabus MySQL is what included, and even in some of the books you will get what Oracle SQL. We will even see one of the content beyond syllabus not included in your syllabus, that is MS Access,
tool of what Microsoft to deal with what databases. So Microsoft Access live demo I will take, so that you all will able to what create databases, and you can able to manipulate data easily using one of the tool given by Microsoft, that is MS Access. So these are various tools, and there are a number of tools available like DB2, AS400, uh, Post GRE, and so many tools available in the market. And I'll be happy if you just search the list on what Google various DBMS, and then you will understand DBMS tools. There are so many variety of DBMS tools available. One of the very famous tool, that is SQLite, that is normally used into what Android application. So you all should understand the importance of this. Let's look at the next part, why there is need of what DBMS, why we need DBMS. So need of DBMS, that is ultimately we can say purpose of what database management system. So you will understand that what exactly is what the purpose, why we should shift from what our traditional file system to DBMS, that is database management system. So you will understand here with this example that suppose if I'm taking an example of college management system, in case of college management system, you will understand some of the part. Suppose if we manage entire your data using files, and if you are taking some of the issues of what file system, that is redundancy of data. So let's look at the meaning of what redundancy of data. Redundancy of data means what? Suppose your name is given here. Okay, your name is, I request everyone to please mute yourself so that there will not be any sort of disturbance. Whenever you have doubt, you can simply post it on what chat window, and at last we will be having question answer session where you can unmute yourself and you can ask the doubt. Okay, so if you have doubt immediately, you can post it on what chat window. Right, I'm talking about what the purpose or the need of database management system. This is what one of the famous question asked into what university examination, that what are the disadvantages of file system, or this question can be asked like this, what are the issues of what file system, or this question can be asked like this, what are the advantages of what database management system, or what is the need of what database management system. Answer to this particular question is same, and that is given into this particular table. And for this table we are taking an example of what college management system. I'm taking this particular example reason you all are well aware, you all are familiar with what college management system. So let's look at the issues with file system. Now I'm taking very first issue, that is what redundancy of what data. Redundancy of data means what? This name indicates that if your name has two entries, for example, if you have entry given as a what, suppose there is example like Mahesh Sanghvi, okay, and these names have been added twice into what your database. Now what will happen? Suppose you have paid 10,000 rupees fees, okay, that is what into the first name, that is Mahesh Sanghvi, and next installment into what the second name of Mahesh Sanghvi. What will happen due to this redundancy? When we access your data, there may be possibility that your 10,000 went to what the first name, and other second installment went to what the second name. So when you will access, suppose I'm accessing the first name, when I'm searching through your first name, I will understand that you have only paid what, 10,000 rupees. Okay, but again there will be dispute. You will say that I have paid 10,000 rupees as well as I have paid the second installment also. It's not your fault, but it is fault of what? Redundancy, and this redundancy issue should be resolved, and it is there into what? File system. So to address this issue, we can use database management system, and in database management system, there is provision to avoid this redundancy. And the moment we will see MS Access, I'll show you the importance of what and the issues of what this redundancy of what data. Trust me, this redundancy of data is not available in case of what? In case of your databases, because in DBMS tool, they are giving you facility to manage this type of redundancy. Next part is inconsistency of data. Inconsistency, I have already given an answer to inconsistency of data. Redundancy means simply repeating the data, and inconsistency means what? When I'm accessing that data, I will understand that either in your account you have paid 10,000,
or you have just paid what the first installment but not the both. So this kind of confusion that will get created, and such an issue, that is error in what your data, is normally known as what inconsistency of data. This inconsistency of data can be easily resolved in case of your database management system, but this kind of problem is there in case of your file system. Next part is difficulty in accessing what? Difficulty in accessing data. Now suppose your data is scattered into different files. Okay, suppose you have taken admission, your admission data is there into one file, then you have paid your fees, that particular information is available into another file, your attendance is available into another file, your results are available into another file, your creation is what available into another file. And now suppose I want that a particular students having what the information, like when he or she has taken admission, how much fees he or she has paid, what kind of creation he or she has made, then we need to check his or her results as well as what entire progress of what attendance. If we want this kind of data, what we need to do, we need to access this entire data which is what already scattered into different files. So to get this kind of data from what file system is a big challenge. You need to open each and every file, and then you need to what access that data, and this particular process becomes one of the cumbersome process. And and that is the reason it becomes what the disadvantage of your file system. So to address this issue, we can use what relationship in case of database management system, and soon we will see that, and this will become an advantage, and this will not be an issue in case of your database management system. So my dear students, actually I'm comparing what file system with database management system, and I'm answering the need of database management system also, and simultaneously I'm answering the answer what are the issues or disadvantages of what file system. So the fourth thing is your unauthorized access. Now unauthorized access means what? Anyone, once you have given the, suppose you can protect your file using password. When you create your file in word, okay, जब भी आप word में file create करते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक password दे सकते हो, that file will be password protected. So when somebody will open that file, then that particular file, it will ask what prompt for the password, and once you have given that password, that entire file will be what accessible to that user, and that user can able to read, write and execute entire data of that file. So if you have to just provide certain rights here in case of unauthorized access, if you have to just provide read only right you need to give to that particular person, that kind of things are not available in case of file system. But entire authorization is possible in case of your DBMS, where you can give only access to particular columns of what your database, and that we will see soon. Next point is your no concurrent access. Now concurrent access means what? Simultaneously data को access करना, यानी डेटा अलग अलग जगह पे भी होगा तो simultaneously आपको क्या करते आना चाहिए, उसे access करते आना चाहिए. That is known as what? No concurrent access. Unfortunately, such type of facility is not available in case of your file system, but in case of DBMS, we can able to what? Access data simultaneously or in a concurrent way. Next and last part of what disadvantage of your file system is no backup and recovery. We can able to take what the backup of file, okay, we can simply copy the entire file and we can put that particular file, but unfortunately if the file gets corrupted, it's really tough to get what such type of recovery. Okay, these things are available in case of your DBMS. DBMS में आप लोग बैकअप इंक्रीमेंटल फैशन में भी ले सकते हैं. इंक्रीमेंटल फैशन का मीनिंग ये है कि कल तक कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था, फीस भरा हुआ था, तो उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया था, कंसीडर किया था, और कुछ लोगों ने एडिशनल फीस भर दिया, तो हम लोग इंक्रीमेंटल फैशन में जा रहे हैं. यानी पहले स्टूडेंट्स जो भी थे उनका लिस्ट एज इट इज, और थोड़े जो भी स्टूडेंट्स अभी और ऐड हुए हैं उनको हम लोगों ने ऐड किया. दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल वे टू टेक व्हाट बैकअप. All these things are available into what? In case of file system. Now you can see, I'm just repeating here the disadvantages of what file system. Redundancy of data is always there, inconsistency of data is there, difficulty in accessing what data because data is scattered into various files. Unauthorized access is always there in case of what file, because once the file is once the password of file is known to any of the user, that user can manipulate that data easily. No concurrent access is available in case of file system, and backup and recovery is not so easy task.
So that is the reason why not to shift from what, from your, okay, so there is need of what, shifting from database from file system to what, dbms. And that is the reason, one of the note that I have given, these are the main reason that one should shift from our traditional file system to database management system. So let's look at, whenever I'm talking about file system, you should always understand, you should have an idea, you should please imagine that you have one of the box file, all your documents are placed into what, your box file. And if I ask you, suppose your box file is having 200 documents that you have stored, all your certificates, all your mark sheets, all your achievements you have placed into your box file. And if I ask you that I want so and so document, how much time it will take to search? It will definitely take more time, because you need to sequentially search, you need to turn each and every page, and then you can able to search that. So it takes what, time. So everyone here should understand the importance of it. Okay, so the next part is what, database management system and its application. There are variety of applications of what, dbms. So one of the application is what, banking. In case of entire banking, you can see that nowadays online banking you all are using. Okay, and before that also entire banking is shifted, and this is the best application of what, your dbms. Even there are nowadays a smart factory, that is industry 4.0 standard is there, and entire manufacturing is what, shifted based on what, the application, that is dbms. You all are well aware that university, your results, entire things are what, based on database management system, because entire data is filled up, and then the result is what, extracted, and you can able to see your results based on your seat numbers and other details. Next application of dbms will be what, airlines. You all are aware that the entire airline management system is through what, this dbms. It is based on this database management application. Even railway reservation system or airline reservation system or bus reservation system, entire reservation systems are based on what, database management system. So this is all about what, the various applications. Some more applications are there that I have already told you, that is railway reservation system. Then you can see one of the application, that is telecommunication. आप देखिए, आपका मोबाइल सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग कॉल करते हैं, आपको पता चलता है आपका इतना इतना बैलेंस है। कॉल करने के बाद आपका बैलेंस क्या होता जाता है, कम होते जाता है। आप इंटरनेट का भी यूसेज करते हैं, तो इंटरनेट के इसमें भी आपको वो बताता है कि इतना यूसेज आपको आज के दिन है, आप लोगों ने इतना उसमें से यूज किया है, इतना आपका बाकी है। तो ये सारा कहाँ पर स्टोर होता है, इसके बैकएंड में एक डेटाबेस होता है, उसी में क्या होता है, ये स्टोर होता है। सो इन दिस एप्लीकेशन आल्सो देयर इज व्हाट, use of what, database management system. In case of e-commerce also, you all are aware, nowadays you all are what, purchasing through what, online portal. Whenever you enter into any of the e-commerce website, like let's say Amazon, when you enter into that, whatever data which is there, that is again at the back end of that is what, your database management system. So database management system is everywhere. You just name the application, it's everywhere. Okay, the next part is what, view of data. So view of data is what, there are basically three levels of view of data. One is your physical level. I'm taking it from what, the basement to what, the to top, means I'm using here bottom up approach. Here very first level is your physical level, then second level is logical level, and the final one is what, view level. सो फिजिकल लेवल मींस व्हाट, आप फिलहाल इसको इस तरीके से आप समझ कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर यू विल अंडरस्टैंड दैट फिजिकल लेवल मींस व्हाट, इट डिस्क्राइब हाउ रिकॉर्ड्स विल बी स्टोर्ड। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब हम लोग डीबीएमएस के डिटेल्स में जा रहे हैं। डीबीएमएस यानी क्या, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स यानी क्या, जो भी टेबल का रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिजिकल लेवल यानी क्या, इट डिस्क्राइब्स हाउ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। आपका जो भी रिकॉर्ड है वो किस तरीके से आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, आपके डिस्क के ऊपर क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। दैट कम्स अंडर फिजिकल लेवल। Next level is what, your logical level. In case of logical level, you will understand this, it describes what, data stored in database. डेटाबेस में एग्जैक्टली कौन सा डेटा हम लोगों को स्टोर करना है। यानी यदि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आपको एक अटेंडेंस का फॉर्म बनाना है, जो फॉर्म आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं अटेंडेंस का, वो आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आता है। लॉजिकल लेवल यानी क्या,
कौन सा डेटा, यानी मैंने फॉर्म में कुछ फील्ड्स डले हैं, कल जो भी मैंने अटेंडेंस का फॉर्म दिया था वहां पर एक ईमेल आईडी था, बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल आईडी वो वहां से कैप्चर करता है, आपका नाम आप लोग एंटर करते हो और आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने लिया हुआ था। ये 3 चीजें मैंने डिसाइड की थी कि क्या मेरे अटेंडेंस में होनी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा टीचर कुछ डिफरेंट वहां पर ले सकता है, रोल नंबर ले सकता है, नेम ले सकता है, ईमेल आईडी ले सकता है, व्हाट्सएप नंबर ले सकता है, या और भी कुछ इंफॉर्मेशन वो वहां से ले सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मेंबर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो लॉजिकल लेवल में क्या आता है कि कौन सा डेटा यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ में उसका क्या रिलेशनशिप रहेगा। यानी मैं एट ए टाइम दो डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा हूं तो दो डेटाबेस में क्या रिलेशनशिप होगी, ये भी लॉजिकल लेवल पे क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। एट लास्ट देयर इज व्हाट, व्यू लेवल। ये व्यू लेवल जो भी होता है जहां पे आप डेटा को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो जो मैं ऑथराइजेशन की बात कर रहा था, या कौन सा डेटा आप लोगों को दिखाना है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्कशीट का आपको सिर्फ आपके मार्क्स और वो जो भी है वो दिखाए जाते हैं, किसने मार्क फिलअप किया है, किसने इस पूरे डेटा का एंट्री किया हुआ है, किसने आपका पेपर चेक किया हुआ है, ये डिटेल्स आपको नहीं दिखाते। लेकिन ये सारे डिटेल्स आपके नाम के साथ में स्टोर किए जाते हैं, सिर्फ वो आपको दिखाए नहीं जाते। जब भी कोई डिस्प्यूट निकलता है, कोई स्टूडेंट रेज करता है, कोई सवाल रेज करता है कि मेरे पेपर के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, मुझे कम मार्क्स आए हैं, उस केस में वो बंदे के साथ में, उस लड़के के साथ में उसका पेपर किसने चेक किया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन भी डेटाबेस में स्टोर की रहती है। वो अवेलेबल होती है कुछ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर को, और एडमिनिस्ट्रेटर उसमें से ढूंढ के और उसको क्या करता है, बाहर लाता है। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ व्हाट दिस 3 लेवल। तो ये तीनों लेवल्स जो है, फिजिकल लेवल जहां पे डेटा किस तरीके से फिजिकली आपके डिस्क में स्टोर होगा, लॉजिकल लेवल जो आपको ये बताएगा कि आपके डेटाबेस में फील्ड्स आपको कौन से होने चाहिए और क्या रिलेशनशिप, एक से ज्यादा डेटाबेस आपके पास है या एक से ज्यादा टेबल्स आपके पास है, उनमें क्या रिलेशनशिप होगी, ये डिसाइड किया जाता है लॉजिकल लेवल के ऊपर। व्यू लेवल के ऊपर कौन सा डेटा आपको हाइड करना है और कौन सा डेटा आपको दिखाना है, इसीलिए व्यू लेवल में आपको एक से ज्यादा यहाँ पर व्यूज जो भी वो आप क्रिएट कर सकते हैं। व्यू 1 सिर्फ आपका नाम और आपका रोल नंबर दिखाएगा, व्यू 2 आपका सीट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके मार्क्स दिखाएगा, व्यू n ऐसे मल्टीपल व्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू लेवल में क्रिएट कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस का जब हम लोग डेमो लेंगे उसमें ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। So I hope you all will understand this particular part, and now it is time to take what poll. I hope आपका अटेंटिवनेस जो भी है वो चेक करने के लिए मैं एक पोल यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ। अभी तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। Okay, I hope you all will enjoy this particular poll and best luck for your poll. I hope this poll will be what launched soon and it will be now visible to you all. पोल जैसे ही आपको दिखाई देता है आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर क्या देना है, जवाब देना है। सो प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोल। दिस पोल इज स्टार्टेड almost 15 students have given answer till time. Okay, this poll is just available for a minute and later on I will simply disconnect this poll. Okay, so your time is up now. I'm ending this particular poll. Out of 57 students, 51 students have what given their vote. And now I have ended the poll. Now see the answer of this poll so that you will understand. Okay, I'm sharing the results. See that the first question here was on what? This DBMS tool, right? I have asked you, the very first question is what DBMS tools are. You can select what multiple option. Okay, the correct answer were MySQL, Oracle SQL and MS Access.
ये तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शंस थे। आप तीनों को, आप सभी लोगों को ये तीनों के तीनों क्या करना चाहिए था, सिलेक्ट करना चाहिए था। माय डियर स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड इज नॉट डीबीएमएस टूल, ये सिंपली एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माई एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल और एमएस एक्सेस, ये तीनों क्या है, डीबीएमएस के टूल्स है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट, views of data has 3 levels, physical, logical और third level मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, जहां पर 88% students have given very right answer. Hearty congratulations to you. Right answer is what, view level. There are 3 types of level: physical level, logical level and view level. Just now we have seen, okay, very few students, that is 2% students said low, 8% students said high and 2% students said what, none of the above. But my dear students, right answer is what, view level. I hope you enjoyed this particular poll. Okay, so let's look at what, let's look at the next part. Okay, so I'll just ending this tool and I'm simply what, pushing you दी लिंक ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस का लिंक मैं आपको आपके चैट विंडो के ऊपर दे रहा हूं, आप आपका अटेंडेंस वहां पर लगा दीजिए। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। तो आपका अटेंडेंस ऑलरेडी पोल से मुझे मिल रहा है, आपका अटेंडेंस चैट विंडो से मुझे मिल रहा है और मैं गूगल फॉर्म से भी आपका अटेंडेंस ले रहा हूं, सो दैट इजीली आपका अटेंडेंस जो भी हो क्या कर पाएंगे, मार्क कर पाएंगे। हार्डली 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। I hope you marked your attendance now. Let's move towards the next topic, that is instances and schemas. Now, instances and schemas means what? We need to understand the meaning of what instances and schema. Here, there are basically 2 types of what schemas, logical schema and physical schema. Schema means overall design of your database. Okay, schema is what, overall design of your database. It is same like your programming variable where we are declaring what, certain variables. In case of C, in case of Python, in any of the language, we normally what, declare some variable at that particular moment of time. ओके, सो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देयर इज व्हाट स्कीमा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ स्कीमा। स्कीमा इज ओवरऑल डिजाइन ऑफ व्हाट, डेटाबेस। आपके डेटाबेस का जो भी ओवरऑल डिजाइन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा। सो लॉजिकल स्कीमा ऑफ डेटाबेस एंड फिजिकल स्कीमा ऑफ डेटाबेस, यू विल अंडरस्टैंड द सिंपल एग्जांपल। लॉजिकल स्कीमा यानी क्या, जो आप लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है उसका स्ट्रक्चर आप लोग जब डिफाइन करके देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, द logical schema, and it is defined like logical structure of what your database is known as what, logical schema. Physical structure of your database is known as what, physical schema। और उसका एग्जांपल क्या है, आपके फाइल्स। तो फिजिकल स्कीमा यानी क्या, आपका डेटा एग्जैक्टली कहां पर स्टोर रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। लेकिन उसके टॉप ऑफ द लेयर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लॉजिकल स्कीमा, जहां पर आपको पूरा डेटा टेबल्स के फॉर्म में जो भी है वो नजर आएगा। एग्जांपल यहां पर दिया है कस्टमर अकाउंट। So this is all about what, schema. So I'm just repeating the definition of schema. Schema is logical. It is ultimately what, design of your database. Okay. And the last topic of the day is what, instance. Instance means what, डेटा स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम इज नोन एज इंस्टेंस। यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग डेटा क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उस मोमेंट को हम लोग इंस्टेंस जो भी है वो बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टेंस आपका टाइम के साथ में क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, क्योंकि आज आपने आपका कुछ इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, आपका इंफॉर्मेशन टाइम के साथ में क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंस्टेंसेस एंड स्कीमा। I hope you enjoyed the session, and if you have any doubt, you can please raise into what, the chat window, okay, or you can unmute yourself, okay, and you can ask me any sort of doubt if you have. Okay, so this is all about means this is what the entire thing that I have discussed into what, this today's session. So if you have doubt, you can ask into chat window, or you can unmute yourself and you can ask. ओके, यदि आपको कोई डाउट्स नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
Yeah, sir, please explain schema again. Okay. Sharvari Bable has asked one of the question. Please explain schema again. Schema यानी क्या? मैं आपको सिंपली यहाँ पर फिर से एक बार दिखा रहा हूँ. Schema means what? Overall design of your database. आपके डेटाबेस का जो भी डिजाइन बनता है, यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर बनाया है, रोल नंबर, नेम, उसके बाद उसका डेट, टाइम और उसका व्हाट्सएप नंबर लिया है. तो मैंने क्या किया, ये फील्ड के नाम आपको सिंपली बताया, डेटा मैंने नहीं बताया, सिर्फ फील्ड का नाम बताया. तो मैंने लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको बताया. दिस इज नोन एज लॉजिकल स्कीमा, यानी क्या? डिजाइन ऑफ योर डेटाबेस. तो डेटाबेस में जो वर्ड आता है बेस, डेटा का जो भी बेस आप लोग क्या करोगे, क्रिएट करोगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल स्कीमा. और एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे स्कीमा का देना चाहूंगा. आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, ब्लैंक फॉर्म आपके पास आता है, देखिए वो ब्लैंक फॉर्म पे सिर्फ आपको ये बोला जाता है कौन से फील्ड का आपको इंफॉर्मेशन डालना है. तो वो ब्लैंक फॉर्म है क्या? लॉजिकल स्कीमा. और आप जब उसके ऊपर डेटा लिखते हैं, वो बनता है आपका डेटाबेस. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट स्कीमा. स्कीमा हैज टू टाइप्स, लॉजिकल स्कीमा एंड व्हाट? फिजिकल स्कीमा. आई होप आई हैव आंसर योर क्वेरी. शर्वरी, आई होप आई हैव आंसर योर क्वेरी. और किसी को कुछ डाउट है तो आप चैट विंडो के ऊपर पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स. ओके. Anand Mukta has asked me the doubt. I want to add two more differences in case of file system. I'm happy that Anand have added two more file differences into what file system. File system is less complex as compared to what DBMS, and other hand, DBMS has more complexity in handling data as compared to system. No, my dear students, I am not agree with you, Anand. Anand, it was the same in case of what earlier days. लेकिन आज की डेट में डीबीएमएस में इतने टूल्स आए हैं, इतना इजी आप लोगों के लिए किया गया है कि आप फाइल सिस्टम से इजीली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो. और उसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सेल. आज एक्सेल भी एक डीबीएमएस का ही टूल है. पूरी दुनिया आज एक्सेल को, नॉन टेक्निकल लोग भी एक्सेल के साथ में क्या कर पा रहे हैं? काम कर पा रहे हैं. Okay, so this is all about that. Your second point I'm taking, file system is less expensive than what DBMS. Yes, this is a very appropriate thing that you have given. Yes, Anand, file system is less expensive than what your DBMS. This is the only drawback. लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जब भी हमें कोई advantages चाहिए तो हमें पे तो करना पड़ेगा. So that is what the cost we need to pay. But trust me, if we are paying that additional cost, ये हम आपका बहुत ज्यादा आगे जाके efficiency क्या कर देगा? बढ़ा देगा. So that is the best part. Next question that is asked by what? Akshay. Okay, sir, what are the examples of what? No concurrent access. No concurrent access यानी क्या? अभी जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वन बाय वन एक सबके मैं जवाब दे रहा हूँ ना, यानी मैं सिक्वेंशियली क्या कर रहा हूँ? जवाब दे रहा हूँ. ये मैं कॉन्करेंटली नहीं दे रहा हूँ, एट ए टाइम सभी के जवाब नहीं दे रहा हूँ. तो साइमल्टेनियसली सबके जवाब यदि मैं देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्करेंट सिस्टम. नो कॉन्करेंट सिस्टम यानी क्या? सिक्वेंशियली वन बाय वन में सबके जवाब दे रहा हूँ. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? No concurrent system. Rohan also asked one of the question, sir, can we use PHP myadmin for storing data? PHP में बैकएंड में MySQL होता है. MySQL के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं. PHP जस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जहां पे आप लोग प्रोग्रामिंग जो भी वो कर सकते हैं, फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म पर जो डेटा आप लोग एंटर करोगे उसको स्टोर करने के लिए आपको MySQL लगेगा. तो PHP के साथ में MySQL ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो PHP के थ्रू हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन MySQL के थ्रू हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. So this is what the answer to your query, dear Rohan. So I'm really happy that many of students are about asking the questions. I'm really happy this kind of interactive session should be there. Okay, so if you don't have any sort of doubt, we can stop here. Okay, because you also have to enter into your next lecture. So my dear students, I hope you all are taking care of what this COVID-19. You all are staying at home. Please stay home, stay safe, and stay connected. Bye everyone. Thank you all.